Hello, children. I hope you all are doing well. Today, I'll be continuing our surrounding, in which I am going to cover. In the yesterday's module, I have covered what is the importance of clean environment, how many types of waste are there, and how we can dispose the waste. Now, I'll be moving to water. Children, as we read, there are two type of waste, biodegradable and non-biodegradable. That is the waste which can be decomposed by microorganism and the waste which cannot be decomposed. Clear? But in our homes, what happened? There is a waste which is in form of water. All waste water from our houses should go through drains into underground pipes. There are underground pipelines that are connected to the main sewage line. These pipes lead to water treatment plants where the harmful substances are separated from water. Now children, जो वेस्ट वाटर की फॉर्म में हमारे घर से निकलता है थ्रू द ड्रेन्स, दैट इज़ नाली, वो हमेशा अंडरग्राउंड होनी चाहिए. क्लियर? ये जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होनी चाहिए और जो ये पाइपलाइंस होते हैं ये मेन सीवेज लाइन से कनेक्टेड होते हैं. और ये सीवेज लाइन से जो पानी होता है, गंदा पानी, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है. दिस इज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. यहाँ जाता है और इसको साफ़ किया जाता है. इससे क्या होता है? इससे जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं सब वाटर से सेपरेट किए जाते हैं. क्लियर? दिस इज़ हाउ वी कैन डिस्पोज द लिक्विड वेस्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. अब जो घरों से सॉलिड वेस्ट निकलता है, वेस्ट generated at our homes, offices, schools, etc. is collected by garbage collectors. They dump the garbage in garbage dumps made by the municipality. From here, garbage is collected by the municipal trucks and usually dumped in open grounds outside the city. Now children, what happened? जो वेस्ट हम घर से, ऑफिस से, स्कूल से जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, वो कहाँ डंप करते हैं हम? गार्बेज जो डस्टबिन्स होते हैं, डस्टबिन से मेन डस्टबिन में करते हैं. वहाँ पे म्यूनिसपैलिटी की गाड़ियाँ आती हैं, वो उसमें डंप करके सिटी से बाहर लेके जाते हैं उसको डंप करने के लिए, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वेस्ट होता है. The garbage in open dump areas is left for a period of time where it keeps decaying. But this is not a safe method of disposal as germs breed here. The other method of disposal of garbage is burning it. Incineration is the process of burning waste in big furnaces or incinerators. Here, waste turns into ash and harmful gases are released. So, this is also not safe. Now, what happened? जब म्यूनिसिपल ट्रक्स हैं उनको डंप कर देते हैं बाहर जाके, सिटी से बाहर जाके किसी एरिया में जहाँ पे डालते हैं उसको, तो काफ़ी टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि जो भी डिकेइंग पार्ट है, डैट इज़ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो डिग्रेडेट हो जाए. बट इट इज़ नॉट सेफ. आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ, जर्म्स वगैरह हो जाते हैं, विच इज़ नॉट सेफ फॉर आवर हेल्थ. क्लियर? सेकेंडली क्या है? सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी चिमनी होती है, दैट इज़ फर्नेसेस. दे आर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसिनरेशन. इसमें क्या होता है? वेस्ट को बर्न कर दिया जाता है बिग फर्नेसेस में, और वेस्ट जो है वो टर्न हो जाता है किसमें? फिर हार्मफुल गैसेस और ऐश में, और रिलीज हो जाती हैं हार्मफुल गैसेस, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ सेफ मेथड. सो हाउ कैन वी डिस्पोज द
waste in safer manner. Here we can have sanitary landfills and compost pits. Now landfill is the first picture. Compost to manure, जो भी आपका कंपोस्ट में हम डालते हैं, कंपोस्ट पिट के अंदर बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, किचन आइटम्स, पेपर, क्लोथ्स, वो मेन्योर में चेंज हो जाती हैं. एंड दिस इज़ अ कंपोस्ट पिट. आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. सेनिट sorry. Sanitary landfills and compost pits are also used for disposal of garbage. In sanitary landfills, deep pits are dug and biodegradable waste is put. It is then covered by a thick layer of soil. In compost pits, the biodegradable waste is left for a period of time. This waste is turned into manure and is later used to make the soil fertile. The pits are reusable and manure is also very good. Now children, you can see here landfills में क्या बनाया जाता है, बड़ा बहुत बड़ा बड़ा पिट को डग किया जाता है जिसके अंदर जो गार्बेज है उसको डाल दिया जाता है और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर कर दिया जाता है. ये बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर लैंडफिल्स बनाए जाते हैं. क्लियर? नाउ कंपोस्ट पिट में क्या होता है, ये बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए होता है आपका. सिंपल किचन गार्डन में भी आपने देखा होगा, शायद आप में से कई लोग करते भी होंगे कि एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर जितने भी आपके किचन के आइटम्स होते हैं, किचन के सब्जी के छिलके हो गए और आपके वेस्ट फूड हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, ये सब डाल देते हैं और 2-3 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, उसको कवर कर लेते हैं ग्रास से और वो फिर मेन्योर में चेंज हो जाता है और उस मेन्योर को हम किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं टू मेक द सॉइल fertile. Now these methods are safer. Now waste management, it is one of the important part of this chapter. जो waste हम करते हैं, waste चाहे वो biodegradable है या non biodegradable, we have to manage it. It is important to find a solution to the problem of waste disposal. There are 3 important things that need to be followed to control the waste problem. These are 3 R's: reduce, reuse and recycle. अब जब हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो हमको 3 R's को फॉलो करना है. रिड्यूस्ड, वेस्ट जनरेशन कम होना चाहिए. रीयूज़, दोबारा यूज़ करना चाहिए. एंड रिसाइकिल, रिसाइकिल करना चाहिए. कैसे? नंबर these are कुछ some ways to help the environment every day. Now I'm telling you, first recycle, we have to use again and again. यूज़ अ ड्रिंक बॉटल, ड्रिंकिंग के लिए हमें डायरेक्ट टैप के नीचे नहीं जाना है, शावर डायरेक्ट नहीं लेना है, इसके लिए हमें क्या ना बॉटल यूज़ करना है. स्विच ऑफ द लाइट, जब भी आपको लाइट फैन का ज़रूरत नहीं, वी हैव टू ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. टेक शॉर्टर शावर्स, शावर अगर आपको वैसे तो बकेट मग से नहाना है, बट इफ़ यू नीड अ शावर तो इट शुड बी अ शॉर्टेस्ट वन. Say no to plastic bags and pick up rubbish if you see it around. आपके आसपास भी कोई कूड़ा वगैरह रहता है, we have to take it and put it in the dustbin. These are the some ways we can help our environment as a kids. Now, first one is reduce. It means to use less, that is reduce the number of things we use, that is natural resources as well as energy. मीन्स हमें क्या करना है, अपना कंजप्शन जितना हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है. नंबर 1 इज़ वी शुड स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़. वी शुड बाय ओनली व्हाट वी नीड. वी should not store things which are not needed. We should always carry a cloth bag for shopping and avoid using plastic bags. These are the few things how we can reduce the waste. Number 2 is reuse. It means to use things again, for example, the plastic or glass bottles in which we buy various food items like jam or pickle can be reused for storing different things in the kitchen.
We can make art and craft materials from old paper, cartons, etc. Cloth napkins and handkerchiefs or hand towels should be used instead of paper tissues and paper napkins. Now reuse means आपको चीज़ों को बार बार यूज़ करना है, like jam की bottles, pickle bottles, and you can make old paper से आप craft and art and craft material बना सकते हैं. In place of paper napkins, use the cloth napkins. These are the things how can we can use again and again. And the last one is recycle. We can recycle some of the waste materials and make useful things out of them. Recycling is reusing of materials like paper, glass, aluminium, plastic, etc. Instead of discarding them. Recycled material is processed and treated in a certain way so that it can be used again. Now, these are the 3R advantage of recycling. When we are recycling a material, what are its advantages? We save our natural resources like trees, soil, water, etc. by recycling. When you recycle paper, you cut less trees to make newspaper. See children, when we are recycling a thing, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रहे हैं, ट्रीज़ को, सॉइल को, वाटर को. जिस तरह से अगर हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं तो इससे क्या होगा, ट्रीज़ कम कटेंगी फॉर मेकिंग न्यूज़पेपर. We save energy as energy is used by factories to make new things. When we are using wisely the energy at our home, आप स्विच ऑफ कर रहे हैं जब आपकी कोई चीज़ नहीं यूज़ में है तो यू आर सेविंग दैट एनर्जी, और वो एनर्जी फैक्ट्रीज यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग द न्यू थिंग्स. वी सेव द एनवायरमेंट by reducing the amount of waste produced by the factories. And the most important thing is this कि हम environment को protect कर रहे हैं by reducing the amount of waste produced by the factories. Clear? I hope it is clear to you. So that's all for today's session. Thank you.